बहुत सारी थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में कि ये होगा वैसे होगा, क्या सोचेंगे क्या नहीं। शूट के दौरान हम एक साथ थे, शूट के बाद हम एक साथ थे, छुट्टियों पे हम एक साथ थे. So the entire process happened pretty smoothly and like even faster than it would happen if we were in Mumbai. तो मेरी दीदी मुझे ये समझाती है कि बी लॉयल. अब अगर आपको एक सीन मिल रहा है तो डोंट थिंक ये सीन अगर मैं ऐसे करूंगी फिर मुझे फैंस पसंद नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. जस्ट बी लॉयल टू योर वर्क. दैट्स. बॉन्दिता के किरदार में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बावजूद भी आंचल साहू ने कुछ ज्यादा ही खूबसूरती से और अब भटनागर या ये कहूँ बॉन्दिता के किरदार को काफी अच्छे से ढाल लिया है अपने ऊपर. और आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं आंचल साहू और उनके साथ जुड़ेंगे उनके को एक्टर प्रविश मिश्रा जो कि नजर आते हैं अनिरुद्ध के किरदार में बैरिस्टर बाबू में. तो आइए चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करें बुलाते हैं इन दोनों को, जानते हैं मेरे यानी विशाखा के साथ what do they want to share about their chemistry, what do they want to share about the journey and a lot more in depth from Barrister Babu itself. Well, I would begin with नाम चाहे सेम है बैरिस्टर बाबू लेकिन चेहरे बदल चुके हैं, लुक्स बदल चुकी हैं. I would say आंचल वेलकम, आप नए मेंबर हैं joining the cast, like काफी टाइम हो गया but then still a welcome to you. I would say it's a pleasure having Pravish and back on Telly Chakkar, but then I would love to know from you आपका सफर इन दिनों का, इतने दिनों का कैसा रहा है with Pravish, with the cast of Barrister? How has the journey been for you? बहुत मजा आ रहा है. हम सेट पे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं बिकॉज मैं एक बहुत ज्यादा शांत, मेरे को घुलने मिलने में बहुत टाइम लगता है लोगों के साथ, बट यहाँ पे मैं सबके साथ बहुत इजीली घुल मिल गई. एंड अब तो बहुत ही मजा आता है मुझे सेट पे आने के लिए. मैं हमेशा छुट्टी होती तो मैं कभी कभी बोर रहती हूँ यार काश आज शूट होता. Tell me one thing Pravish, because काफी सारी speculations थी कि कौन बनने वाली है बॉन्दिता, grown up बॉन्दिता. And I think you are the first one जिसको शायद fans बहुत मैसेज करते होंगे कि है ना कौन बनेगा, प्लीज मत करो. So how did you react when you found that Anchal is gonna be playing Bondita? Yeah, so the entire the apprehension ka that entire time, even I used to see on Instagram कि यार अच्छा, so I never knew anything as such. मैं भी Instagram पे देखता था, oh now this name is, they're trying to get this name in, they're trying to get this person in. And if I didn't know, I used to Google, no, who is this person? So even I didn't know. I was totally unaware. People used to message me. I didn't have anything to say. I didn't know what to say. So I never said anything. So the entire process was as, like, I was unaware as anyone else would be. Although जब mock shoot हम करने लगे, like I did a mock shoot with a couple of Bonditas, a couple of options. Anchal was one of them. Options. Bonditas. Not for me, like for the entire show, for the entire story. So, but for you, as in options for Bondita. So yeah, so Asha was one of them, and it was fun doing the mock shoot with her. So, but then as you just said that जिनके बारे में आपको पता नहीं था, you were just searching and all that. So did you search about Anchal, and if yes, what did you find about her? Like what was your first approach towards her? Yeah, so I'd heard, I got to know that Anchal, like, they're testing Anchal for the character, and all I knew about Anchal was that she's doing a show with the same production house. So I'd heard a bit about her, like we had a few friends in common. So not like we didn't know each other, we never spoke about each other or to each other, but I just knew a bit about her. So I didn't have to Google, I just had to go on Instagram and check her profile. So I did that. और what was your first feedback? कौन सी वीडियो देखी तुमने? I was just checking the entire feed, and then I was checking reels. I don't like to post much on reels, but I like to see reels. So I was seeing her reels, so nice. Okay, so tell me one thing honestly. When you saw, you had the brief idea about Anchal, and then you met her on the sets, mock shoot हुआ and all that. So वो वाले time पे was it like how was the bonding then? Like was it a quick process, or was there a break the ice moment between the two of you? So I think it happened pretty smoothly, mainly because we were not in Mumbai. Like we were not going back home after shooting. We were staying there. We were staying together in the same property, in the same hotel, and the entire team was together. Anchal, I, Aura, and like everyone was together. Like the entire cast. So shoot के दौरान हम एक साथ थे, shoot के बाद हम एक साथ थे, छुट्टियों पे हम एक साथ थे. So the entire process happened pretty smoothly and like even faster than it would happen if we were in Mumbai. Wow. Okay. And what about you, Anchal? Because for you it was a new journey altogether, and Bondita का जो ये भार था that you have to ace Bondita, and I remember them saying that okay, we don't want anyone else, be Anchal or anyone to play Bondita. We just want Bondita as in Aura to play Bondita. So how difficult was it to actually adapt into that environment, and how was
How was the bonding on the sets? ये सब जो भी आपने कहा, ये सब चीजें मैं भी सोच रही थी जब मुझे ये चीज के लिए ऑडिशन या मॉक शूट देना था. एंड आई टेल यू वन थिंग, जब मैं मॉक शूट पे गई थी, जब मेरा मॉक शूट हो रहा था प्रवेश के साथ, I mean, I was little comfortable. जब मैं सोलो मॉक शूट कर रही थी, I was literally shivering. And I do not fumble much, but मैं वहाँ पे हर एक लाइन में फंबल कर रही थी because I was so much scared and you know मैं ऐसे शिवर कर रही थी बोलते समय because बहुत सारी थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में कि ये होगा वैसे होगा, क्या सोचेंगे क्या नहीं, because it is a ongoing show. ये upcoming नहीं था, तो पहले से एक कैरेक्टर सेटअप हुआ था, उसको वापस से ये करना वाज रियली डिफिकल्ट. बट आई थिंक जब से हमने शूट करना स्टार्ट किया बहुत ही ज्यादा स्मूथली चीजें हो गई. एंड एज ही सेड कि हम एक साथ ही होटल में रहते थे, तो मंगेश सर यूज्ड टू यू नो टेक वर्कशॉप्स, तो चीजें थोड़ी बहुत इजी हो गई थी. In that regards, what has been your favorite memory until now on the sets of Barrister Babu? Being on the sets of Barrister Babu. Wow. Okay. And what about you, Pravesh? Because you to have two sides, one with Bondita and Aura. उस टाइम की कौन सी फेवरेट मेमोरी थी, एंड अब जब आंचल बन के आ गई है बॉन्दिता, तो तब आपकी कौन सी फेवरेट मेमोरी है Barrister की? So when we started shooting like with Badi Bondita, in the scenes also, like in the story also, we used to have quite a few recall scenes where Anirudh recalls Bondita 8 साल बाद. तो similarly in real life also I've had recall scenes. जैसे Aura, like अगर वो मुझे डांट खिलवाती थी हमारे डायरेक्टर सर से, या कोई प्रोडक्शन में या कुछ भी कोई चुगली कर देती थी, तो I've had similar recalls. She's done the same thing, like as a grown-up person, as a grown-up Bondita, she's done the same. So for me it was reliving the entire thing, and for Anirudh it was like कि 8 साल के बाद हुआ है, तो मेरे लिए तो बस एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते पहले तो और पता था, एक हफ्ते बाद ये कर. Okay, in that regards, Anirudh, I mean Pravesh, आप मुझे बताइएगा बॉन्दिता यानी कि Aura और आंचल में कुछ similarities आपको नजर आई, like maybe in their work or maybe in the kind of the way they actually take your case and you know keep bugging you over things. कुछ मिला? They both keep taking my case at every possible moment, and in every possible way. So that's one similarity. The other similarity which I would like to say it right now is that दोनों बहुत समझदार हैं. They understand how to get the scene, like how to like the barter of emotions. It just happens very smoothly and effortlessly with both of them. For me. Okay, what about you, Anchal? What has been like the bestest quality that you could see in your co-stars in Pravesh? आप उनसे ऐसा क्या है जो सीखी है? प्रवेश एक तो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है एज अ को-स्टार. मतलब अगर कभी आप कोई चीज में अटक जाते हो, फंबल हो जाते हो, तो वो समझ जाता है एंड ही यू नो समझा देता है कि अच्छा ऐसे करो वैसे करो. और दूसरी बात है कि ही टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी ऑन द सेट. मतलब अगर समझो कोई भी ऐसे डाउन फील कर रहा है, तो ही विल बी द फर्स्ट जो उनके पास जाके उनसे बात करेगा. तो ये सब चीजें मैं यू नो बहुत सीखती हूँ प्रवेश. Okay, in that regards, the last quick questions before I jump to the segment part, I would love to know because कुछ fans जो हैं जिन्होंने जब आपकी एंट्री से पहले शो को ट्रोल भी किया, नेगेटिव भी कहा, फिर आपकी एंट्री हुई, and then still I have seen a lot of fans not accepting Anchal as Bondita, even though you're trying your level best to ace the character of Bondita, and you know जो benchmark set हुआ था आप उसको achieve करने की कोशिश कर रहे हो. In that case, how do you keep yourself motivated? Because you know it's not easy to give a shot and then come back and see those kind of comments, because आपने एक effort डाला है उसमें, आपने मेहनत करा है. So how do you keep yourself motivated and focused? See, मैं ये सब चीजें खुद पे हावी होने बिल्कुल नहीं देती. एंड कभी कभी अगर मैं थोड़ी सी ये हो जाती तो आई कॉल माई सिस्टर, आई कॉल माई फादर कि दीदी ऐसे ऐसे बोल रहे. तो मेरी दीदी मुझे समझा देती है कि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक है, यू डोंट पे अटेंशन टू इट. आप अपने सीन, अपने काम को लेके लॉयल रहो, बाकी सब चीजें विल फॉल इन द प्लेस राइट, इन द राइट प्लेस. तो मेरी दीदी मुझे ये समझाती है कि बी लॉयल. अब अगर आपको एक सीन मिल रहा है तो डोंट थिंक ये सीन अगर मैं ऐसे करूंगी फिर मुझे फैंस पसंद नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. जस्ट बी लॉयल टू योर वर्क, दैट्स. Okay, well, I remember Pravesh जब हमारी last बात हुई थी, बॉन्दिता साथ में थी, तो उस टाइम पे I remember she had all these stories about you stealing somebody's phone, you pranking on somebody, you doing something or the other, kind of those funny hilarious stories. आंचल, आपके पास कोई ऐसी कहानियां हैं प्रवेश के बारे में जो वो सेट पे करते हैं? ये हाँ, ये सब तो करता ही, सबके साथ ऐसा करता ही रहता है, छोटे मोटे प्रैंक्स. एंड एक चीज होती है, जब भी मैं सोती हूँ, मुझे फ्री टाइम मिलता है, ये आके मुझे उठाएगा ही. लाइक अगर मैं
5 मिनट हुए रहते मेरी आंखें बंद, ही कम एंड वेट। तो ये ऐसे सब चीजें करता है, अभी भी करता है। Okay. In that regards, does Anshul does anything of that sort? Pravish कुछ ऐसा है जो वो करती है मस्ती खोर वाला something on the sets? Yeah, she'll say something, and the moment you ask her that, have you said that, she'll effortlessly say कि अरे no, मैंने तो बोला ही नहीं. And she does that with so much ease that I question myself कि did I actually hear that from her, or did I just, was it some illusion? So, and she does that so easily now, मतलब it's खुद पे शक होने लगता है कि शायद मैंने गलत सुन लिया, शायद इसने नहीं बोला हो. Wow. Oh, that's great. Then I would love to know, what do the fans expect from your pairing? Because, you know, there are a lot of twists and turns जो हम लोग Barrister में देख रहे हैं, and, you know, the journey has only been progressing. And fans are quite hooked to the seats that, okay, next क्या होना है, next क्या होना है. So what can they expect out of, you know, Anshul and Well, Pravish? I'm telling you, हम खुद अगर आगे कुछ स्क्रीन पे तो लाइक ये क्या हो गया, अब वापस कुछ नया, तो हमें करते समय इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हम खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि अच्छा ये भी हो रहा है करके. तो इट वुड बी रियली फन वॉचिंग. So just keep watching and loving Barrister Babu for more twists and turns. Oh, Perfect. What do you, Pravish? she said it so flawlessly. So yes, just be like, you all have always loved the story, you all have lived with it. So just continue living with it. It's getting interesting. It is, उसमें सारे रस और ऐड हो रहे हैं, सारा श्रृंगार और आ रहा है. So just enjoy the process. Watch it on TV on Colors at 8:30 p.m. Well, thank you so much, Anshul. Thank you so much, Pravish, for joining me here at Telechakra. I really hope the best for you guys, and I hope कि जो journey है Barrister की वो और भी ज़्यादा लंबी हो जाए ताकि the fans can simply fall in love with your characters all the more. Thank you so much, Vishaka. It was fun. Thank you. Thank you so much for joining. Bye bye. Well, thank you so much, guys, for watching this chat session with me, Vishaka Pandit, जहाँ आज मेरे मेहमान थे Anshul Sahu and Pravish Mishra himself. I really hope that you guys will keep loving and keep spreading all the positivity and support towards the two of them, because ये लोग हैं काफी excited आज भी आप लोगों का support पाने के लिए. And until then, this is me, Vishaka Pandit, signing off for now. You stay tuned to Telechakra for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakra's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.